नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने आज आम इंडियन पॉलिटी रे गोटे इम्पोर्टेंट चैप्टर सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 टी वन लिनियर डिस्कशन करिया। मु एहार थियोरी क्लास पूर्वरु डिस्कशन करि सारछि। आपण माने चाहिले मो चैनल को जाइकी प्लेलिस्ट रु चेक करि परिबे। चलंतु आ डेरी न करी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करिबा। आमर फर्स्ट क्वेश्चन हेउची व्हिच एक्ट सर्व्ड एज द प्राइमरी ब्लूप्रिंट एंड ए मेजर स्ट्रक्चरल सोर्स फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यार आंसर हेउची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आमे माने जानि चंती कि आमर सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रा विभिन्न प्रकार पार्ट गुडी को एई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु आसीची। Next question, from which country's constitution was the concept of fundamental rights borrowed? Concept of fundamental rights एहा हमरा USA constitution रु आसीची। मो आपनकु वीडियो रे बतैतिली US रु आसीतिबा सोर्स गुडी का विषय रे तार गोटे ट्रिक बतैतिली। ए ट्रिक टी होची where is vice president and SP furnishing। एहा माध्यम रे आपण US रु आसीतिबा सोर्सेस गुडी को अति सहज रे मन रखि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर अडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। यार आंसर हेउची आयरलैंड। ए DPSP आम इंडियन पॉलिटी रो पार्ट IV रे मेंशन रही जार आर्टिकल हेउची 36 to 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, the concept of a federation with a strong center was taken from which country? Her answer is Canada. Next question, from which constitution did India borrow the concept of fundamental duty? आमे माने पूर्व आलोचना कले कि फंडामेंटल राइट्स USA कॉन्स्टिट्यूशन रे आसी। ठीक सही बड़ी फंडामेंटल ड्यूटी पूर्वरु थिबा USSR रु आसी जहा कि एबे रूसिया रूपे परिचित। Next, the idea of liberty, equality and fraternity enshrined in the Preamble was borrowed from which country? एहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन रु आसीची जहा कि 1798 मसिया रे घटितिला। Next, which country inspired the provision of a joint sitting of both houses of parliament? एहा ऑस्ट्रेलिया रु आसीची। मु ऑस्ट्रेलिया रु आसीतिबा सोर्सेस गुडी का विषय रे गोटे शॉर्ट ट्रिक बतैतिली जहा होजी CGL एप। एहा माध्यम रे आपण एहा को सहज रे मन रखि परिबे। नेक्स्ट, द प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच कंट्री? एहा साउथ अफ्रीका रो आसीची एवं एहा आर्टिकल 368 रे मेंशन रहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, the concept of a nominal head like the president and the cabinet system was borrowed from which country? Her answer is UK. Next question, from which country was the concept of a procedure established by law was taken? Her answer is Japan, जहा कि article 21 रे mention रहिछि। The method of election of the president of India was borrowed from which country? Answer हेउची आयरलैंड। आयरलैंड रो आसीतिबा अन्य सोर्स गुड के हेउची नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एवं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट, द कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री? एहा USA कॉन्स्टिट्यूशन रो आसीची। नेक्स्ट, which country's constitution inspired the provisions related to the suspension of fundamental rights during an emergency? एहा जर्मनी रो कॉन्स्टिट्यूशन रु आसीची जहा कि एहा देखौची कि नेशनल इमरजेंसी समय रे फंडामेंटल राइट्स रो समस्त आर्टिकल गुडी का सस्पेंड हो जाती किंतु 20 आर्टिकल 20 और 21 को छाड़ी। Next, the system of PIL in India found its structural roots in the judicial system of which country?
यार आंसर होउची USA। नेक्स्ट द concept of concurrent list in the 7th schedule was borrowed from which country? यार आंसर होउची ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट the provision of the office of the governor was taken from which historical document? आंसर होउची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट the concept of rule of law was adopted from the constitutional system of which country? आंसर होउची UK। एवं UK रु आउ मध्य गुटिए आसीची जहा कि होउची कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जार आर्टिकल होउची 148। नेक्स्ट the nomination of members to the Rajya Sabha by the president was borrowed from which country? आंसर होउची आयरलैंड। आयरलैंड रु मन रखिया पई गोटे सूत्र बतई थिली जहा होउची एंड ई रे होउची इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एन रे नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्य सभा, डी रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट द कांसेप्ट ऑफ ए सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया वाज अडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच कंट्री? आर आंसर होउची यूके। नेक्स्ट द स्ट्रक्चरल सेटअप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच कंट्री? आर आंसर होउची USA। Next, from which document did India adopt the system of federal judiciary and administrative details? यार आंसर होउची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Next, the preamble to the Indian Constitution was largely inspired by the Constitution of which nation? यार आंसर होउची USA। Next, the phrase "We the people of India" closely mirrors the opening of which other country's constitution? और आंसर होउची USA। The advisory jurisdiction of the Supreme Court जहा कि आर्टिकल 143 रे मेंशन रही was adopted from the constitutional framework of which country? और आंसर होउची कनाडा। Next, the parliamentary form of government was adopted from which country? और आंसर होउची UK। Next, the concept of a bicameral parliament जहा कि लोकसभा एंड राज्यसभा वाज borrowed from which country? आर आंसर होउची UK। UK रु मध्य आउ गोटिए सोर्स मध्य आसीची जहा कि होउची सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट द कांसेप्ट ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड देयर रोल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ व्हिच कंट्री? आर आंसर होउची UK। नेक्स्ट द पावर ऑफ द सेंटर टू अपॉइंट स्टेट गवर्नर्स is a future the power of the center to appoint state governors is a feature borrowed from which country? यार आंसर होउची कनाडा। नेक्स्ट the idea of vesting residual powers with the central government was borrowed from which nation? यार आंसर होउची कनाडा जहा कि आर्टिकल 248 रे मेंशन रही। नेक्स्ट the system of emergency provisions draws structural inspiration primarily from which 1935 document? यार आंसर होउची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट the institutional system of the controller and auditor general was adopted from which act? controller and auditor general जहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन रे आर्टिकल 148 रे मेंशन रही सेति पई आर आंसर होउची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट द कांसेप्ट ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? आर आंसर होउची ऑस्ट्रेलिया जहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 13 रे यह उल्लेख रही एवं यार आर्टिकल होउची 301 टू 307। नेक्स्ट principles of republicanism having an elected head of state rather than a monarch were taken from which country? Our answer is France। Next, the 5-year plans were inspired by the planning system of which country? यह पूर्व थिबा सोवियत यूनियन बा USSR रु आसी। नेक्स्ट द कांसेप्ट ऑफ प्रेरोगेटिव रिट्स जहा कि हाबियस कॉर्पस, mandamus etc was adopted from the legal system of which country? आर आंसर होउची UK
जहाँकि आमर आर्टिकल 32 रे मेंशन रही जड़े सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करिपरिबो आर्टिकल 32 अनुसार एवं हाई कोर्ट रे रिट होची आर्टिकल 226। The provision that the Council of Ministers is collectively responsible to the lower house of parliament comes from which country? आर आंसर होची यूके जहाँ कि आमर आर्टिकल 75 एवं क्लॉज 3 रे मेंशन रही। नेक्स्ट the public service commissions that is UPSC and state PCS were structurally established based on which pre-independence act? यार आंसर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Which country's constitution influenced the provision of the vice president acting as the ex officio chairman of the upper house जहाँ कि राज्यसभा यार आंसर होची USA। नेक्स्ट the separation of powers between executive and judiciary was conceptually aligned with Western political thoughts, but which country's strict separation influenced the debate? यार आंसर होची USA जहाँ कि आमर आर्टिकल 50 रे मेंशन रही। नेक्स्ट the absolute sovereignty of a parliament is a British concept, but India modified it with judicial review. From which country? Our answer is USA. Next, which feature of the Indian Federation having a single unified judiciary breaks away from the model of which country? Our answer is USA. The process of impeachment of the President of India is borrowed from which country? Our answer is USA जहाँ की आर्टिकल 61 रे मेंशन रही। Next, the privileges of the houses of parliament and its members were originally matched with those of which foreign lower house? Our answer is UK रो House of Commons जहाँ की आर्टिकल 105 क्लॉज 3 रे मेंशन रही। The provisions of giving weightage to science, art and social service in Rajya Sabha nominations comes from which European country? Our answer is Ireland। ओ पूर्वरु आयरलैंड रू आसीथिबा प्रोविजन गुडिकर गोटे शॉर्ट ट्रिक बताइथिली जाकी होची एंड आपण माने याकू भलो भाबे मने रखिथिबे। नेक्स्ट द फेडरल स्कीम वेयर द यूनियन इज इनडेस्ट्रक्टिबल बट स्टेट्स कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड वाज अडॉप्टेड बाय एनालाइजिंग व्हिच कंट्रीज मॉडल? यार आंसर हेउची कनाडा जाकी हमर आर्टिकल 3 रे मेंशन रहिछ। नेक्स्ट which act provided the division of legislative powers into 3 lists? ए तीनटा लिस्ट होची फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। आर आंसर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट द कांसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज जहाँ की आर्टिकल 40 रे मेंशन रही इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री? आर आंसर होची यूएसए। ठीक सही भली नेक्स्ट क्वेश्चन द कांसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ जहाँ की सही आर्टिकल 14 रे मेंशन रही इज बोरोड फ्रॉम व्हिच लीगल सिस्टम? आर आंसर होची यूके। नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज एंड लेआउट वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी बट व्हिच नेशंस अनरिटन सिस्टम टॉट देम द कन्वेंशंस ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट? आर आंसर होची यूके। नेक्स्ट एवं आमर आजिर शेष क्वेश्चन होची what percentage of the Indian Constitution administrative provisions were estimated to be derived from the Government of India Act 1935? मु पूर्वरु बतैथिली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो आम कॉन्स्टिट्यूशन को विभिन्न प्रकार प्रोविजन आसीची सेतिपई आर आंसर हेउची अराउंड 60 to 65%। एथि सहित आमे इंडियन पॉलिटी रो सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 50 टी मोस्ट इंपोर्टेंट वन लिनियर डिस्कशन कले। आपण माने यहा को भलो भाव रिवीजन करंतु एवं मन रखंतु एवं यहा आगामी परीक्षा गुडी करे आपण को फलप्रद हो बोली कि मोर आशा। एही बळी वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को टिपिया पे भूलंतु नहीं। जय जगन्नाथ।